हेलो फ्रेंड्स मुझे जानकी आपको वेलकम करुँची मोर यूट्यूब चैनल शिक्षा जानकी को आज मुझे डिस्कसन करने जाऊँगी B.Ed सेकेंड सेमिस्टर सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि यूनिट 1 रो व्हाट इज द मीनिंग एंड नेचर ऑफ द सोशियोलॉजी। ओके चलो डिस्कसन करवा। First of all, we know that sociology is a branch of science which deals with the society and the human beings or the peoples which are living inside the society, how they are closely related with the society, with the environment, and how they are living in a hierarchical order with the different diversity inside the society. Hierarchical order means the people are living in a higher to lower order or lower to higher order सेटा को आम कहे कौन ना सोशियोलॉजी। तो देखो नोट्स कौन कर सोशियोलॉजी इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमन सोशल बिहेवियर। सोशियोलॉजी इज also known as science of society. The term sociology is coined from Latin word socius and which means associate and logos from Greek word means systematic study of society. Okay, the word sociology was first given by French philosopher and mathematician Auguste Comte. Okay, Auguste Comte जे कि otherwise known as the father of sociology, Auguste Comte. Okay, तो देन आ गोटे आपण ऐड भी करि परिबे आ भी अलगा जो माने साइंटिस्ट अछंती बा फिलोसोफर अछंती से मानकर भी ऐड करि परिबे जोटा कि नोट्सटा बहुत भलो हबो। तो डोकेन कोन कहउछंती डोकेन डिफाइन सोशियोलॉजी एज द scientific study of the process of interaction of persons. Okay, Green conclusion Green stated that sociology is the synthesizing and generalizing science of the man in all his social relations. Okay, एबे चलो देखबा मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी रो मीनिंग कोन कहउची। फर्स्ट पॉइंट इट एम्फासाइजेस ह्यूमन बिहेवियर एंड इट्स सोशल बीइंग। सोशियोलॉजी कौन कौन अधिकांश ह्यूमन बिहेवियर उपरे आ तार सोशल बीइंग तार से केमती तार सोसाइटी रे से केमती रहूची केमती तार बिहेवियर केमती तार वे ऑफ लिविंग केमती से जिनसटा से सोशियोलॉजी इंक्लूड करूची। सेकंड पॉइंट कौन कहूँ इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन इन ग्रुप्स केमती रोची गोटे डिफरेंट ग्रुप हेले भी डिफरेंट रिलीजियस कास्ट विभिन्न प्रकार जिनस हेले भी से माने केमती आगु को जाउचंती सोसाइटी रे केमती से माने भलो से रहउचंती से जिनसटा को कौन कहूची सोशियोलॉजी इंक्लूड करूची। देन थर्ड पॉइंट कौन कहूँ इट हेल्प्स टू स्टडी द सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल फिनोमिनन। ओके, फोर्थ पॉइंट कौन कहूँ सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स मैटर इज डिराइव रेंजिंग फ्रॉम क्राइम टू रिलीजन फ्रॉम द फैमिली टू द स्टेट। ओके, तो ये सोशियोलॉजी संपूर्ण टोटाल गोटे लिविंग बीइंग रो तर बर्थ रु नहीं डेथ पर्यंत से सोसाइटी रे कौन करूची को स्टेज रे कौन से करूची से क्राइम हेउ कि भल गोटे जिनस किसी गुड किसी इवेंट बनाओ कि जहाँ भी से करूची सोसाइटी भितर तो से सबू को लेकिन स्टडी करूची कि सोशियोलॉजी। 5 पॉइंट कौन कहूँ इट स्टडीज about the social stability to radial of change in whole society. Okay, it gives an understanding of how human action consciousness both shape the surrounding cultural and social structure. Okay, 7 point conclude sociology is a field of study that analyze and explain importance of matters in our personal lives our communities and the world. Okay, sociology कौन करछि जो matters जेमति कि आमे कहउछ ना मनी वेल्थ ए सब जिंस जोटा कि आम लाइफ रे केते मैटर करूची आम लाइफ रे जोटा कि आमे कहउछ कोन गोटे ह्यूमन बीइंग को गोटे हायरार्चिकल ऑर्डर लोअर रे रखुची कि हायर रे रखुची एटा कोन डिपेंड करूची तार ए वेल्थ बा तार मनी तार कम्युनिटी बा तार पर्सनालिटी जेटा कोन सोशियोलॉजी माध्यम रे हमें एटा जानि परिबा। 8 पॉइंट कोन कहूची हेल्प्स टू अंडरस्टैंडिंग द की ऑफ सोशल प्रोसेस। ओके, ए 9 पॉइंट सोशियोलॉजी गिव्स द एबिलिटी टू सी एंड अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन द ब्रॉड सोशल फोर्स एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। ओके, पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ टोटल ब्रॉड सोशल रो तार फोर्स विषय आम जापर केमती आम कनेक्ट अच्छी केमती सोसाइटी ऑफ ह्यूमन बीइंग केमती निजर परंपरा बा सोसाइटी जहाँ कल्चर ताको मानिकी केमती चलुची सेटा से कंडक्ट करुची। 10th पॉइंट कौन कहूँ इट गिव्स स्टूडेंट्स द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली अबाउट ह्यूमन सोशल लाइफ एंड देयर प्रॉब्लम्स। एटा एटा कौन कहूँ जदि हम स्कूल लाइफ रे बा स्कूल रे सोशियोलॉजी आम पढ़ौचे ए सब आम जापर कौन ना स्टूडेंट माने केमिति सोसाइटी रे गोटे भल ह्यूमन बीइंग हवा पई बा सोसाइटी गोटे भल
वेल डेभलप गोटे सिटीजन हिसाब से बचापी हेले कौन कौन तार स्ट्राटेजीज दरकार सोसाइटी कौन चाहूँगी आ केमी से स्कूल टाइम से क्रिएट करमी से भल गोटे मनीष हो पार गोटे भल भल गोटे सिटीजन हो पार आ सोसाइटी जहाँ भी किसी प्रोब्लेम आसे तो से केमती सॉल्व कर पार सेटा को तार से डेभलप कर ओके। तो यहाँ थी आम मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। एवं चलते देखिए आम नेचर ऑफ सोशियोलॉजी ओके आम नेचर ऑफ सोशियोलॉजी करवा फ्रेंड्स एमती डायग्राम गोटे करवा ठीक है जोटा कि एग्जाम रे बहुत भल मार्क फेचिंग होता है एमती गोटे पूरा फुल पेज कवर करके गोटे डायग्राम करवा तो नेचर ऑफ सोशियोलॉजी आसो आम एमती पॉइंट वाइज मन रखीदेव तापर पॉइंट वाइज मन रखला से प्रत्येक पॉइंट को आम डिस्क्राइब कर लिखला जोटा कि ऑटोमेटिक 2 पेज कंप्लीट हो ठीक अच्छे। तो फास्ट पॉइंट कौन कौन सोशियोलॉजी नेचर कौन कौन नेचर ऑफ सोशियोलॉजी इज ए ह्यूमनाइजिंग साइंस ओके एक्सटेंड इट्स टेंटेकल्स okay then third point कौन कौन concern with social facts solve the society understanding human behavior solution to problems differs from exact science things are relatives okay। तो चलो तो एक डिस्क्राइब केमती करवा देखिबा। तो फर्स्ट पॉइंट थिला हमर कोन ना ह्यूमनाइजिंग साइंस कौन सोशियोलॉजी इज ए ह्यूमनाइजिंग साइंस इट डील्स विथ द डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन सोशल सिस्टम फॉर ए पीपल टू मेक वर्ल्ड ए बेटर प्लेस ओके। एटा कोन कहूची ह्यूमन बीइंग कि ए सोसाइटी रे रहिबा कि गोटे सबुठ बेटर प्लेस तैयारी करुच्ची गोटे तार निजर सिस्टम बनई ना निजर सिस्टम को डिजाइनिंग कर जोटा कि गोटे ह्यूमन बा इंडिविजुअल कि बेटर हम जोटा कि रहिबा कि ताको कष्टसाध्य हम नहीं ए समाज रे ओके। देन सेकंड पॉइंट कौन कही it extends its tentacles in every direction and field okay। Society is the part of the social science which interest with other subjects such as politics economics statistics geography and law ओके। थर्ड पॉइंट कौन कौन सोशल फैक्ट्स अच्छे आमर अच्छी ना डायग्राम सोशल फैक्ट्स। तो थर्ड पॉइंट कौन इट कंसर्न विथ द सोशल फैक्ट्स ओके इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग ह्यूमन नीड्स एंड देन डेवलप सोसाइटी दैट मीट देम ओके। सोसाइटी रे रहिबा कि कौन किछिटा नियम किछिटा श्रृंखला तैयारी करा जाय जोटा कि कौन ह्यूमन नीड्स हिसाब रे तैयारी करा जाय छि जोटा कि बेटर लाइफ पई ओके। फोर्थ पॉइंट कहूँ सोशियोलॉजिस्ट आर द पीपल हु सॉल्व्स द सोसाइटी सोशियोलॉजिस्ट स्टडी पीपल सोशल लाइफ्स एक्टिविटीज बिहेवियर इंटरैक्शन जो मैंने सोशियोलॉजिस्ट रहिले से माने कौन सब बेले सर्वे करुछंती सोसाइटी रे विभिन्न प्रकार ग्रुप मानन को नेकी विभिन्न प्रकार कम्युनिटी मानन को नेकी जे सेमानक भितर किछि प्रॉब्लम अछि कि किबा किछि सेमानक वे ऑफ लिविंग केमती अछि सेमानक भितर इंटरैक्शन केमती अछि सेमानक भितर अंडरस्टैंडिंग केमती रहउछि जोटी कौन यदि किसी प्रॉब्लम थो से केमती सॉल्यूशन बाहर करेंगे ना यदि किसी सॉल्यूशन ना थे किसी भल इंपैक्ट अच्छी तो अदर ग्रुप मानक केमती से शिखा जापर से विषय से कौन जो मैंने सोशियोलॉजिस्ट से सब बड़े चेष्टा करते ओके। 5 पॉइंट कौन कहूँ सोशियोलॉजिस्ट बिलीव दैट ऑल थिंग्स आर रिलेटिव्स okay। Sociologists believe that over surrounding influencing through and action so that to develop better society better thoughts should be developed okay। Sociology does not solve the problem sociology problem solve करनी किंतु ये कौन तार रूल्स और रेगुलेशंस तैयारी करता है जो कौन जो वे रे इंडिविजुअल गला पर प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी हो पारिबो ओके। सोशियोलॉजी identifies the problem and its causes but sociology identifies the problem and its causes but solving its depend on the society। 7th point कौन कहूँ sociology helps in understanding human behavior okay। Sociology believes human behavior it is shaped by the group so which people belong and by the social interaction that takes place within those group okay बुझी पारे। तो विभिन्न प्रकार सोसाइटी विभिन्न प्रकार कल्चर आम देखुवा कास्ट सिस्टम हो रिलीजियस वाइज हो सब रिलीजियस तार वे ऑफ लिविंग अलग वे ऑफ माने वे ऑफ लिविंग ठारो ड्रेसिंग ठो सब अलग अलग से बिलीफ भी अलग से सब जिनस अलग अलग जमती हिंदू मानक रहा अलग क्रिश्चियन मानकर मुस्लिम जैन तो सबू कम्युनिटी बा सबू रिलीजियंस मानकर तांकर विश्वास करबा जोटा कि भगवान को पूजा करिवार स्टाइल हो कि खाइबार माने स्टाइल हो कि तार घर एमती कि घर जोटा रोचंदी से घर स्टाइल हो कि पोशाक पत्र हो सब अलग अलग टाइप रे आ से कम्युनिटी बा से ग्रुप तांको रूल और रेगुलेशन हिसाब रे से माने रुहंती।
ओके 8 पॉइंट कौन कौन सोसाइटी प्ले ए पार्ट इन द ह्यूमन बिहेवियर सोसाइटी हेल्प्स इन शेपिंग ह्यूमन बिहेवियर बाय इन्फ्लुएंसिंग देयर थॉट्स ओके तो 9th पॉइंट कौन कौन सोशियोलॉजी डिफर्स फ्रॉम साइंस है सोशियोलॉजी साइंस डिफर केमती डिफर इट इज ए पार्ट ऑफ सोशल साइंस विच इज लिंक्ड टू डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ साइंस लाइक साइकोलॉजी कॉग्निटिव साइंस साइकोबायोलॉजी सोशल न्यूरोसाइंस ओके सोशियोलॉजी गोटे साइंस नुहे कि गोटे ब्रांच साइंस मीन साइंस गोटे पार्ट जमती ये कौन इनक्लूड कर साइकोलॉजी केमती सोसाइटी रे जो इंडिविजुअल बा ह्यूमन बा ग्रुप मानकर साइकोलॉजिकल थिंकिंग केमती से केमती गोटे ग्रुप अलग ग्रुप प्रति केमती बिहेव करमती से प्रति कौन से चिंताधारा अच्छी से सोसाइटी भितर केमती छोट छुआ नहीं बड़ से कौनटा डेभलप होची कौनटा कॉग्निटिव लेवल डेभलप होची कौन से शिखुंट भल जिनस कि खराब जिनस कि क्राइम आड़ को जाऊँगी कि किए भल जिनस शिखुची तो से जिनटा कौन सोशियोलॉजी शिखाऊँगी ठीक अच्छे ए सरला आमर मीनिंग आउ नेचर ऑफ सोशियोलॉजी वीडियोटी आपको भल लगी लाइक और शेयर करने जमा भूलि आ मो चैनल को सब्सक्राइब करने जमा भूलि जदि आपको किसी नुआ वीडियो अपलोड करी आपण पाखु सीधा सड़क पहुँची ओके थैंक यू।